कि मुझे वो मेरा शो याद आ गया जो मैंने आपके साथ किया था पिछले साल, जिसमें आपने डिफेंस पीएसयूज कहा था कि ये यहाँ से ज़बरदस्त मूव दिखाने वाले हैं। और एचएएल का मूव देखिए, आप बीडीएल का मूव देखिए, खुद बीईएल का मूव देखिए। बीईएल में तो खैर आपने तो 300 टाइम्स पैसा बनाया, लेकिन इवन लास्ट के 2 साल में भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। तो ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है डिफेंस में, और ये आगे भी रहने वाली है यहाँ पर? Anuj, let me explain a point to you. The Ukraine war है ना, that has clarified a lot of thoughts in everyone's mind. For example, the US produces 150 million artillery shells a year. That's the production out there. Generally, in a peaceful war, that was working fine. Now, Ukraine itself is using 150 million artillery shells in a matter of 2-3 months. So if you want more drones, you want more missiles, you want more artillery shells, you got to stock up that production. So India is a large base for defense, and this policy of government to focus Atmanirbhar, as they call it, ki domestic focus karo, that's giving a huge fill up. Now India needs ships, it needs tanks, it needs missiles, it needs rifles, it needs so many things in defense. So jo bhi ho economy may grow at 6%, 8%. Orders will keep flowing for this company because no government can ignore the defense. So I think they will do well from here. Some of them had a very good run-up. Yes. So I'm not saying you buy all of them at this point. You wait or you pick your spots. But I can still find good value in the a stock that you mentioned, Hindustan Aeronautics, which I also own at this time. It's a monopoly business. There's no one else in India who can produce airplanes, helicopters, service them as Hindustan Aeronautics does. And I think COVID के lows इसका भाव 600-700 रुपया था. बिल्कुल. It was that cheap at that time. Company just declared a 20 rupee interim dividend. So why would you not buy it? I mean, I pay a lot of importance to cash flow, and if the company has the ability to pay out dividend from that cash flow, and all these companies are doing it because they're mandated to do 35%. So we found that as a historic opportunity, and it worked out. ठीक है, मैं ज़रा अपने डायरेक्टर साहब को भी एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जरा एक दमानी जी का एक डिस्क्लेमर प्लेट बना लें और उसको भी फ्लैश करें जो वो कह रहे थे, तो वो 2-3 बार फ्लैश हो जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने बोला कि ये इनकी रिकमेंडेशन नहीं है ऑब्वियसली इस लेवल पर, लेकिन इनकी बाइंग रही है और ख़ासतौर से एचएएल बीईएल में ज़बरदस्त पैसा बनाया है। और कहीं वैल्यू दिख रही है सर आपको इस समय इस मार्केट में, पीएसयू या नॉन पीएसयू? There are a lot of, I think, जो हम लोग करते हैं, जो bottom up stock picking करते हैं, even at this lofty level, सेंसेस का 60-65 हज़ार के level पे, we are finding value. There are good companies, even in the private sector, they're trading at 5 multiple, 7 multiple, because जो market का is sometimes going to new age economy, sometimes going through some other sector it likes. But I think if you're bottom up stock picking, you're finding good values with good dividend yields. So unfortunately, I can't mention names, but with a lot of conviction, I'm telling you that even in the private sector, I'm finding a lot of companies that's trading at single-digit multiples with 3-4% yield built into them, and businesses which I'm ready to hold for 3-4 years, specialty chemicals, to give you an example. बिल्कुल, और थोड़ी सी वो रिसर्च आपको भी करनी होगी। देखिए, एक जैसे मैं कई टाइम से कह रहा हूँ कि सिर्फ एक टिप कल्चर से बाहर निकलकर थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए लंबी अवधि के लिए, तो एक वेल्थ जो है लंबी अवधि में बनती है स्टॉक मार्केट में। ट्रेडिंग करके आप ठीक है पैसा कमा लेंगे, लेकिन उस पैसे को फिर लगाइए मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। दमानी जी, मैं आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा समय की कमी है, लेकिन मुझे आपसे आईटी पर एक आपका व्यू चाहिए, क्योंकि पिछले आपने आईटी में, जैसे इन्फोसिस में आपने 500 गुना पैसा बनाया, सीएमसी में आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। अब ठीक है, वो उतना पैसा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो पिछले 1 साल में हुआ है, ये क्या हुआ एग्जैक्टली आईटी कंपनीज के साथ? जो इतनी ज़बरदस्त बुल मार्केट चल रही थी, इतना उसको कैसे धक्का लगा और एकदम से जो 40-40, 50-50% स्टॉक गिर गए, लार्ज कैप आईटी स्टॉक गिर गए अपने पीक से, उसका कारण क्या था और यहाँ पर क्या करें? आई थिंक अनुज, आई फील दैट इंग्लिश में कहावत है दैट यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। तो आपको थोड़ा ग्लोबल पैनिक लगा तो आपने आईटी भेज दिया। Actually, I think Indian IT will do well for 2 reasons. I will tell you. Ki suppose you're doing cost cutting in America because the economy is going through pressure, so you will outsource to India in order to get cheaper IT done. और जो कोविड ने हमें सिखाया एक चीज कि we need to digitize the world. You know, everything has to be contactless delivery or e-commerce, all of which can be done in India only. So suppose you're a big bank in America or a big retailer in America who wants 5,000 people on a project. दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा 5,000 people. You have to come to India to do that. So I think it'll do well. So I think market is making a mistake. I think they're treating this as defensive stocks or as stocks that will slow down growth. Maybe it'll slow down for 6 महीने साल भर,
but जो long term trajectory है इनकी, I think it remains intact, and I would be buyer of technology companies at this point. You would be buyer of technology company. एक बैंक